So hello students. So in today's class, we'll be learning about some important cyclic structures. Okay. Now see, the first one is cyclic structures. Now the first cyclic structure is cyclopropane. Now propane means what? How many carbon atoms? Total 3 carbon atoms. So basically just try to arrange these 3 carbon atoms in the form of a ring. And ring ka matlab cyclic structure. Clear? So basically we are having 3 carbon atoms. 1, 2, 3. So just connect the first carbon to the second carbon with a single bond, the second carbon to the third with a single bond, and third with the first carbon with again a single bond. So this is a cyclic structure having how many carbon atoms? Having 3 carbon atoms. So basically इसका name क्या होगा? Cyclopropane. Now just see, for each carbon atom, total how many bonds has been made? Total 2 bonds. जैसे इस फर्स्ट कार्बन को अगर आप देखते हो तो इस कार्बन ने राइट में एक बॉन्ड, लेफ्ट में एक बॉन्ड, टोटल 2 बॉन्ड उसने बनाए हैं. जो सेकंड कार्बन है 1 2, that has also made how many bonds? 2 bonds. Third carbon again has made how many bonds? 2 bonds. So basically हर कार्बन को टोटल 4 bonds बनाने हैं. तो each carbon will make 2 more bonds in order to fulfill their valency. Clear? तो हर कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे? 2 हाइड्रोजन. इस तरीके से आप 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दोगे. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन. और क्या पूछ सकता है? साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस just count the number of carbon atoms, count the number of hydrogen atoms and write it. How many carbon? 3 carbon atoms. How many hydrogen? 6 carbon atoms. Because एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 2 कार्बन के साथ टोटल 4 हाइड्रोजन. सो 3 कार्बन के साथ इन टोटल 6 हाइड्रोजन. Okay, so this is the structure of cyclopropane and its molecular formula is C3H6. The next one, cyclobutane. Again, bute means how many carbon atoms? 4 carbon atoms. So again, try to arrange the 4 carbon atoms in the form of a ring. Closed structure, cyclic structure जो भी आप बोलो. So 1 2 3 4. फर्स्ट कार्बन को सेकंड से विद अ सिंगल बॉन्ड, सेकंड कार्बन को थर्ड से विद अ सिंगल बॉन्ड, थर्ड कार्बन को फोर्थ से विद अ सिंगल बॉन्ड, एंड फोर्थ कार्बन को फर्स्ट कार्बन से विद अ सिंगल बॉन्ड. अगेन देख लो, हर कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया? 2 बॉन्ड्स. ईच कार्बन हैज मेड हाउ मेनी बॉन्ड? 2 बॉन्ड्स. 1 2 1 2. ये कार्बन थर्ड वाला 1 2 एंड फोर्थ कार्बन आल्सो 1 2. तो अगेन ईच कार्बन विल मेक 2 मोर बॉन्ड्स in order to fulfill their valency. 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay, just connect hydrogen atoms. 1 2. So this is cyclobutane. Again the molecular formula is what? How many carbon atoms? 4 carbon atoms. How many hydrogen? 8 hydrogen. Because एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो 4 कार्बन के साथ टोटल 8 हाइड्रोजन एटम्स. डन. थर्ड, cyclopentane. Again pent means what? 5 carbon atoms. So pentagon, try to arrange the 5 carbon atoms in the form of a pentagon. ठीक है, बन गया पेंटागन. 5 कार्बन एटम्स रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो गए. अगेन इन इसमें भी सिमिलर, एक कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन एटम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So in total 5 carbon atoms, C5, and how many hydrogen? 10 hydrogen atoms. So C5H10 is the molecular formula of cyclopentane. Next is cyclohexane. Okay, cyclohexane. Hex means how many carbon atoms? 6 carbon atoms. So again try to arrange all the 6 carbon atoms in the form of a ring. 1 2 3 4 5, and this is the sixth. 6 carbon atom होंगे. Again in this also each carbon will make how many bonds?
फोर बॉन्ड्स, सो कार्बन जो है ऑलरेडी दो बॉन्ड्स बना चुका है, ईच कार्बन एट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये कार्बन एक दो बॉन्ड, दिस कार्बन आल्सो टू बॉन्ड्स, सिमिलरली ईच कार्बन एटम हैज मेड two bonds each. So again, in order to fulfill its valency, it will make two more bonds with hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so its molecular formula will be total 6 carbon and total 12 hydrogen. Done? Understood? Now, one last cyclic structure we'll see, that is benzene. Just try to remember its structure, benzene. Okay? Now, in benzene, total 6 carbon atoms will be connected in the form of a ring. Okay, connect हो गए. Now, we have to make some changes in this. So basically जो 6 कार्बन एटम्स है ना, इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपको प्लेस करना है. लाइक सपोज हम यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है. आफ्टर दैट कार्बन एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड. अगेन आफ्टर दैट कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड. अगेन आफ्टर दैट कार्बन एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड. आफ्टर दैट कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड. एंड आफ्टर दैट अगेन सिंगल बॉन्ड. तो ये अल्टरनेट वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में. पहले कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल एंड अगेन सिंगल. सो दिस पैटर्न हैज टू बी अरेंज्ड. बट ड्यू टू दिस आप ये चेक करना कि यहाँ पे हाइड्रोजन के जो एटम्स है ना, उनमें कुछ चेंजेस आएंगे. अगर हम सपोज साइक्लोहेक्सेन से कंपेयर करते हैं तो, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि बेंजीन में टोटल 3 डबल बॉन्ड्स आ गए हैं, तो उनकी वजह से हाइड्रोजन के एटम्स में डिफरेंस आएंगे. तो ना जो सी द डिफरेंस, अगर आप यहाँ चेक करोगे तो हर कार्बन एटम टोटल कितना बॉन्ड्स बनाया है? 3 बॉन्ड्स. देख लो, 1 2 3. सिमिलरली कोई भी कार्बन का आप चेक कर लो, दिस कार्बन 1 2 3. थर्ड कार्बन देखोगे तो 1 2 3. सो बेसिकली ईच कार्बन हैज मेड हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3 बॉन्ड्स. तो हर एक कार्बन एटम को एक बॉन्ड और बनाना है इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स वैलेंसी. So each carbon atom will have how many hydrogen atoms? Only one hydrogen atom connected to it. H, 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 H. ठीक है, समझ में आ गई बात? Now, its molecular form is what? C6H6. Please यही difference आप याद रखेंगे. For benzene, the molecular formula is C6H6. But for cyclohexane, the molecular form is C6H12. For cyclohexane, I am saying. One more possible question from this topic. Now, as you can see, single bond is present, double bond is present. So the question आपसे पूछा जा सकता है that how many double bonds between carbon carbon, how many single bonds between carbon carbon, and how many single bonds between carbon hydrogen. This is the possible question जो यहाँ से फ्रेम हो सकता है. तो आप खुद ही देखो यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे. सो कार्बन एंड कार्बन के बीच टोटल 3 डबल बॉन्ड्स हैं. नेक्स्ट, कार्बन एंड कार्बन के बीच में टोटल कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं? 1 2 3. ओके, सो कार्बन एंड कार्बन के बीच टोटल 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं? सिंपल, टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ टोटल ऑफ 6 single bonds between carbon and hydrogen. You can just count 1 2 3 4 5 6. Okay, simple. So these are the possible questions that can be framed from this topic. I hope students this is clear. Okay, so we'll move to the next class with some new topic. Okay, thank you everyone.